Assalamu alaikum everyone else, and I hope that everybody is fine. So today we are going to discuss about one more poem, The Character of Happy Life, which is written by Sir Henry Wotton. As we do remember that after looking at the title, so that you may very much aware about it, that what we are going to discuss about. This is a very nice poem, The Character of a Happy Life, which is very difficult for us because always we are thinking about others' lives, we are not looking at ourselves, who we are. So let me say what Sir Henry Wotton has been written regarding this. As you must know about that he is a religious poet and he was also the believers on the things what is happening, what is going on, and he was having the philosophical ideas. On the other hand, what we are going to discuss that what is happiness, and then the characteristic of happiness and how to spend the happy life. So let's see, and then we will do analyze the poem. So, and he was the critic scholar as well. So let me see the introduction about the poet. The poem, The Character of a Happy Life, has been written by Sir Henry Wotton. He was born in Kent and the son of country gentleman. In this poem, Wotton has described the characteristic of a poor person who can truly be called a happy man. So here what the Henry was saying that in this poem he is going to discuss about the person who is truly happy. Truly happy means he was internally happy, not externally. He doesn't want it to show somebody else that how happy life he was spending, but his inner soul is happy. So now next para we will have to discuss about what the poet was saying about it. The Character of a Happy Life is a simple and straightforward poem in which Sir Henry Wotton sets out the principle of a good life and what a man should avoid at all cost. If you want to spend the happy life, so that what things you should have to avoid and what things you should have to adopt so that the life can be easy for you and then happy for you. Either there should not be any cost to spend the happy life. जब भी आप खुश होना चाहते हैं तो obviously it is not necessary that you are spending a lot of amount of money and then you will feel happy. This is not a good rule to spend the life happily. The poem addresses themes of happiness, joy, simplicity, and religion. So here we are going to discuss about the happiness, joy, simplicity, and then religion as well. That what the religion is saying about to us, that how do we have to spend the life. And then according to the Islam, according to the religion, if we are spending our life so that we will feel happy, and this is not only happy, we will feel internally relief would be there, and we are in calm and peaceful mind. So peaceful mind is very essential for our life. If you are not having a peaceful mind, अगर हम हर वक्त किसी ना किसी के बारे में सोचते रहेंगे, so which means that we are out of religion, we are not very near to the religion. अगर हमें religion से touch है and we know about something the religion, so what the religion is saying, so which means that you should have to be happy either whatever the circumstances or whatever the scenario it is. जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हालात हैं, उनको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, so that the life could be easy for you. So let me see what the poet has been written about the poem. Next. Okay, now what he has written about the poem, we find Wotton's poem is a sharp sense of contrast between the uneasy life of the ambitious man and the contented life of man satisfies to live obscure life of peaceful virtue. What the Wotton has been written in a sharp sense, यानी कि हमारे पास एक वो सेंस नहीं होना चाहिए either how the people are spending the life, so accordingly we are going to spend the life. यहाँ पे उसने contrast बताया है between uneasy life and the ambitious man, जो एक बहुत ज्यादा मतलब आगे तक की सोच रखता है, and the contented life of man satisfied to live an obscure life of peaceful virtue. अगर हमारे पास सेटिस्फाइड माइंड है,
so that our life is going to spend peacefully. Sir Henry Wotton wrote from experience, for he was a distinguished servant of the crown who had seen here for himself the rise and fall ambitious man. The poem, consisting of 6 stanzas of regular couplet rhymed, Nature is the peace, not the land, by John Keats. So here what we are going to discuss, Sir Henry has got the experience from his life, and then he was just telling us to that how the servant can be distinguished in his life by wearing the crown as well. अब एक person है उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही है, whatever he wanted. On the other hand, we will talk about the servant. He doesn't have such an amount to spend his life happily. लेकिन यहाँ पे हम एम्बिशियस की बात कर रहे हैं कि अगर उसकी सोच अच्छी है, उसके ख्यालात अच्छे हैं, तो दैट कैन बी अ रिच पर्सन, दैट कैन बी हैविंग अ पीसफुल माइंड. अगर आपकी सोच ही अच्छी नहीं है, यू आर नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद द अदर, सो दैट मीन्स यू आर अ गुड. So what the John Keats is saying, nature is the peace, not the land. So you will not have to think about the land कि हमारी property हो, हमारे पास पैसा हो. If you will love with the nature, so that you will be living in a peaceful environment. You will feel peace internally. So next, now we are going to discuss the whole poem stanzas by stanzas. Yes. Here we are going to discuss about the stanzas as well as the paraphrasing of the stanzas. Once again, I am going to tell you what is paraphrasing basically. The paraphrasing you do remember whenever you will write down, it can be as it is in poetic form or either it can be in the paragraph form. It is written over here that in a paragraph form. So the same poem, same stanzas you will have to write down, but by using easy words. Some different vocabulary you will have to use. That is called the paraphrasing. So one by one, we are going to discuss how happy is he born or taught. So that he must know that how happy he was on his act. Whatever he want, he will have to do. The serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth is utmost skill. So here what he was just telling about that in this stanza, the character of a happy life, the speaker begins with a simple statement. The old-fashioned poetic diction confuses the lines slightly, but overall it is clear that he means who is born and learns immediately not to serve another human being is very happy. हमें सारी जिंदगी भी अब इस चीज में नहीं स्पेंड कर देनी चाहिए that how to make the others happy. The theme of this servitude reoccurs within the poem a number of times. If he is going to be happy, he must have an armor of honest thought. अगर वो इंटरनली खुद खुश है और वो खुद खुश रहना चाहता है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरों को भी खुश रखेगा. जबकि एक इंसान खुद ही खुश नहीं रहना चाहता, he is not happy internally, so that he was unable to or make the happy others. His mind must be pure, and the man must have a willingness to pursue truth at all costs. उसमें purity होनी चाहिए and he should be having the power to happy others. It is this basic simple truth that at the root of this journalized man life. And that is very much true whenever we want to hide ourselves so that we start telling a lie. That is very much wrong. Whatever you are doing, either you are getting the success or you are not getting the success, you are not getting the lie. आपको झूठ किसी किसी मत पे भी नहीं बोला, इससे आपकी पर्सनैलिटी खराब होती है. Whatever the circumstances are there, you should have to speak truth. You should have to spend the life happily. So what we are going to discuss here, the personalization के जैसा आप चाहोगे आप वैसा कर सकते हो. It is in your own hand. सेकेंडली यहाँ पे किस चीज की बात की, फ्रीडम की बात की है. आप जो चाहो जैसा करना चाहो, यू आर हैविंग द फ्रीडम. आपको कोई बाउंड नहीं कर रहा कि यू आपने ऐसी लाइफ गुजारनी है या किसी को फॉलो करना है. नो, नॉट एट ऑल. सेकंड थिंग एंड थर्ड थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ऑनेस्टी.
Honesty, as you know, is the best policy. So either if you are the honest person, everybody can trust you. Next is simple and speak truth. You should be simple. You never think about how the others are spending the life. आप अपनी life देखें, that what do you want, and according to your thinking, your mentality, you will have to spend the life. So let me see what we are going to discuss in second stanza, what it has been written. So we are on stanza number 2, and then we are discussing about whose patients not his masters are. So यानी जहाँ पे हमारी ख्वाहिशात हम पर हावी हो जाती हैं, सो दैट वी नेवर थिंक अबाउट कि हमने अपनी ख्वाहिशात को आगे बढ़ाना है या उनके लिए मजीद सोचना है। हमारी ख्वाहिशात हम पर हावी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर हम अपनी ख्वाहिशात को अपने पर हावी ले आएंगे, सो दैट द लाइफ कैन बी डिस्टर्ब, राइट? Now, on the other hand, whose soul is still prepared for death. अब क्या है, the people who are just think about that कि we are ready for the death. सबको जाना है एक ना एक दिन, लेकिन जो ऑनेस्ट पर्सन है, जो ट्रूथफुल पर्सन है, so that they will always think about that we should not be alive here always, right? So what would happen that they are always ready for their death, and they are not fearful person, they are not called fearful person, and वो दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक हो जाते हैं और इस फिक्र से आजाद हो जाते हैं। उन्हें कोई इस चीज की टेंशन नहीं होती, कोई ख्याल नहीं होता कि हमें मौत आनी है, क्योंकि उनको मालूम है दे आर स्पेंडिंग देयर लाइफ अकॉर्डिंगली। वो कोई बाउंड नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दुनिया में गुम हुए हुए। सो अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, वो दुनिया की बिल्कुल परवाह नहीं करते ऑफ पब्लिक फेम और अ प्राइवेट ब्रेथ। अब हमारे यहाँ क्या है कि वी विल हैव टू सी के लोगों में हमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग फेमस हो, हमें फेम मिले, एंड देन दैट कैन बी द डिफिकल्ट फॉर अस कि हम कोई भी काम करना चाहते हैं, सो दैट वी ऑलवेज थिंक अबाउट के लोग क्या कहेंगे, व्हाट दे विल थिंक अबाउट इट, सो दैट हियर ऑफ पब्लिक फेम इज नॉट नेसेसरी। Whatever the people are saying, so this is according to their mentality, they will have to say in front of you. सो दिस इज नॉट अ मैटर। यहाँ पे यही कहा है कि जो लोगों शोहरत के लिए भागते हैं या तरह तरह की शोहरत कैसे कैसे हासिल करते हैं, या वो ये कहते हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ऑन दी अदर हैंड, आई एम गोइंग टू गिव द एग्जांपल टू यू दैट कि आजकल नॉर्मली देखा जाता है लोग फेमस मतलब फेम हासिल करने के लिए वट एवर दे वांट टू डू दे आर डूइंग। तो उसमें समटाइम हमें क्या होता है कि वी आर जस्ट फीलिंग समथिंग रिग्रेटिंग। हम मतलब फेमस होने के चक्कर में कभी-कभी कुछ गलत काम भी हमसे हो जाते हैं व्हिच कैन नॉट बी bearable for us. So whatever, so that's why we are saying here that whatever you are having according to your mentality, maturity, you will have to do the task. अगर आप ये चाहेंगे बस हमें फेमस होना है, हमें कोई भी टास्क दिया जाएगा या हमें ये चीज अचीव करनी है, so that you are going to do, that is wrong. आप अपने आप को देखो, आप ये देखो कि what is good for you and what things you are able to do. तो आपने वो काम करने हैं। Now next is we will see what it has been written in this paraphrasing. Continuing on to the second stanza of the character of a happy life, Wharton rearranges the syntax of the next line in order to more poetically describe how he should regard his patience. किस तरीके से उसमें बर्दाश्त है, वो किस तरीके से अपने ख्वाहिशात को मारता है। They shouldn't be his masters. क्योंकि वो जो उसकी ख्वाहिशात है वो उस पे हावी नहीं होनी चाहिए। अगर ख्वाहिशात उस पे हावी हो जाएंगी, so that can be very much difficult for him. Then the speaker tells the listener that one needs to remove themselves from the world of public fame if they want to really be prepared for death. यहाँ पे स्पीकर हमें बार बार क्या कह रहा है कि टेल्स द लिसनर, हमें उनको बताना है, जो लिसनर है हमारे, जो सुनने वाले हैं, वी शुड हैव टू टेल टू देम दैट वन नीड्स टू रिमूव देमसेल्फ। सबसे पहले हमारे अपने अंदर की जो हमारी थिंकिंग है, मेंटेलिटी है, वी शुड हैव टू रिमूव फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पब्लिक फेम, के हमें बस मशहूर होने, पूरी दुनिया में हमारा नाम हो। इफ दे वांट टू रियली बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अगर वो चाहते हैं कि एक दिन वो भी आना है कि उन्हें ज़ाहिर इस दुनिया से जाना है, तो फिर वो अवामी शोहरत के लिए नहीं भागेंगे, बल्कि दे विल आल्सो डू फॉर देयर डेथ एज वेल, क्योंकि उनको पता है कि एक ना एक दिन तो टाइम आएगा कि वी विल हैव टू एनी हाउ डाई। सो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस। और जब हमें डेथ का ख्याल होता है कि जाहिर बात है हमने यहाँ नहीं रहना, हमने मर जाना है,
तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ करना भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि मरने के बाद भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ऐसे जो लोग होते हैं वो ना डर होते हैं, वो फियरलेस होते हैं। वो फिर दुनिया की परवाह नहीं करते कि दुनिया में क्या हो रहा है, और जिनको मौत से डर नहीं लगता, और दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वन, क्योंकि दे आर मेंटली प्रिपेयर फॉर देयर डेथ एज वेल। So let me see, but now it is written in stanza number 3. Stanza number 3. In stanza number 3, we will discuss about who envies, yes, who envies none that chance doth raise. अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये हसद की बात कर रहे हैं कि वो जो शख्स है, वो जो इंसान है, वो किसी से किसी किस्म का कोई हसद नहीं रखता। वो ये नहीं सोचता ये मुझसे ऊपर है, ये इसके पास मेरे से ज्यादा है, इस तरह की सोच उसके जहन में नहीं आती। और अगर आती है तो वो इस चीज को रिमूव करता है फ्रॉम हिज माइंड। nor wise who never understood. Here what we are going to discuss that कोई किस्मत से अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है, कोई मकारी से अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है, और उसे कभी भी समझ नहीं आता। ठीक है, मतलब जाहिर है अगर उसने जाना है, अगर उसने किसी को देख लिया कि वो एक बहुत ऊंची जगह पे पहुंच गया और उसको तो बहुत फेमस मिल रही है, सो दैट किसी गलत तरीके से वो भी चाहेगा कि मैं किसी माउंट्स आर गिवन बाय प्रेज। यहाँ पे प्रेज जो कहा गया है, ये मकारी को कहा गया कि चापलूसी से कितने गहरे जख्म देती है, और दैट वी शुड नॉट हैव टू बी बॉदर्स, नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। यानी वो दुनिया के असूलों को नहीं समझता, महज अच्छाई के असूलों को समझता है कि ये मेरे लिए रास्ता अच्छा है, यहाँ पे मुझे चलना चाहिए, और अगर मैं दूसरे रास्ते पे जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, दैट आई विल बी मूव टू द रॉन्ग साइड, दैट कैन बी नॉट गुड फॉर मी। तो इधर इफ अदर पीपल आर गोइंग टू द रॉन्ग साइड, आप उसे ला सकते हैं तो उनको सही रास्ते पे लेकर आए, बट दैट इज नॉट गुड फॉर यू, दैट यू आर आल्सो गोइंग टू द रॉन्ग साइड, आपने उस रॉन्ग साइड पे नहीं जाना है। सो लेट मी सी इन पैराफ्रेजिंग, a good and happy man will not envy those who by luck have had their statue raised, nor will they indulge in vice. He believes that rules of good rather than rules of state should control one's life. There is also warning in these lines against praise and how it can corrupt one's good intentions. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, द सेम थिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट अ गुड एंड हैप्पी मैन विल नॉट बी इनवाइट दोज हु बैड बाय लक और हैव हैड देयर स्टेच्यू। कुछ तो अपनी किस्मत से, अपनी मेहनत से उस जगह पे पहुंचे हैं, और कुछ लोग अपने मतलब दे हैव डन द रॉन्ग थिंग्स टू रीच ओवर देयर। तो बेटर है कि आप वहां पे गलत तरीके से ना जाएं। यू विल नॉट सपोज टू बी थिंक अबाउट अदर, के किसी को आप हर्ट कर रहे हैं और फिर उस जगह पे जा रहे हैं, या कोई और जाना चाहता है, बट मीन्स अपनी बड़ी चापलूसी के साथ यू हैव जस्ट टेकन दैट प्लेस ऑफ समबडीज। तो ये एक अच्छी चीज नहीं होती। आप अपने रूल्स खुद बनाएं, एंड देन अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स यू शुड स्पेंड द लाइफ अकॉर्डिंगली। नाउ स्टैंजा नंबर 4। इन स्टैंजा नंबर 4, whose hath his life from rumors feed, यानी कि वो चाहता है कि उसकी जो जिंदगी हो वो बिल्कुल अफवाहों से आजाद हो। रूमर्स अफवाहें को कहते हैं। whose conscience is his strong retreat, जिसमें उसका जमीर उसको जो है मतलब मजबूत पनागाह हो, उसका जो मतलब सेटिस्फेक्शन है, इंटरनली जो सेटिस्फेक्शन है उसमें वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, उसका जो सोल है इंटरनली, सो दैट ही वाज नॉट फीलिंग रिग्रेटिंग। whose state can neither flatters feed, उसकी जो हालत है, और द पीपल हु आर जस्ट टेकिंग द प्लेस इंस्टेड ऑफ हिम, सो दैट वो क्या करे, वो चापलूसों के पीछे ना भागे कि तुम मेरा ये काम कर दो, तुम मेरा ये काम कर दो। ही नेवर थिंक अबाउट दोज पीपल हु आर डूइंग द वर्क रॉन्गली। वो अपने काम खुद करना जानता हो, उसको पता हो कि ये मुझे मतलब रॉन्ग साइड पे दे आर मोटिवेटिंग मी। नो रूल मेक ऑपरेसर्स ग्रेड, और ना ही उनकी बर्बादी जालिमों को अजीम बनाती है। ठीक है, either they are doing the wrong thing, so that we should not have to think about that how bad those persons were, हमें उनको छोड़ देना चाहिए। We should have to spend the life according to our mentality, according to our thinking, according to our patience, according to our strength.
So similar principles are reiterated in the next lines of The Character of a Happy Life. The speaker says that a happy man will free himself from rumors, यानी उसको कोई टेंशन नहीं होती कि उसके लिए क्या अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कौन उसके बारे में क्या कह रहा है, and turn to his conscience when in doubt. The same man's ego will not be corrupted by flatterers who come with praise. He also shouldn't and won't give in to oppressors who seek to ruin his soul. कुछ लोग ऐसे होते हैं those who want to ruin the soul as well, लेकिन उसे किसी किस्म की तारीफ की, किसी किस्म की उसे करेक्टेड फ्लैटर्स की परवाह नहीं होती, सो दैट दैट कैन बी रूम टू हिम। वो इंटरनली उसका जो सोल है वो इतना स्ट्रांग होता है so that he can fight with others. He never bothering that what they are doing in the oppressors for him. In next stanza, we are going to discuss about who God doth. Yes. So here we are going to discuss about that who God doth let and early pray. यानी कि वो सुबह शाम अल्लाह ताला की इबादतें कर रहा है, सुबह सवेरे उठता है और रात देर तक उसकी इबादत करता है, उसके लिए टाइम स्पेंड करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, और खुदा की रहमत के लिए, मतलब उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए कि मैं अगर इस तरीके से इबादत करूंगा, अल्लाह ताला को टाइम दूंगा, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। एंड एंटरटेन द हार्नेस डे, और वो पूरा दिन जो है मीन्स फियरलेस जिंदगी गुजारेगा, उसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, उसका माइंड जो है वो पीसफुल होगा। विद अ रिलीजियस बुक और फ्रेंड, या तो वो कोई दीनी किताब पढ़ेगा, और आइदर ही कैन आल्सो स्पेंड द टाइम विद हिज फ्रेंड एज वेल। अब फ्रेंड भी वो ऐसा होगा हु इज गोइंग टू गिव द नॉलेज टू हिम रिगार्डिंग द रिलीजन, वो कोई फजूल टाइम वेस्ट करने वाला फ्रेंड नहीं होगा। So that either if we are spending the time, so it is better for us to read the book, or either we are spending the time with those friends who are good for us. So it does not take great skill or talent, the speaker adds in these lines of the character of a happy life. To live a happy life, it is only God's grace that one needs, not his gift, that will bring pleasure. A truly happy man can entertain himself with a friend or a religious book. कोई भी चीज आपको वो खुशी नहीं दे सकती, या तो एक अच्छी किताब आपको वो खुशी दे सकती है, और आपका फ्रेंड जो अच्छा फ्रेंड है वो आपको खुशी दे सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में रहे, सो दैट यू आर नॉट हैविंग एनी अदर वे टू गो फॉर द एंटरटेनमेंट साइड, so it is better for you, you will start reading the religious book, so that your soul can be in calm and then peaceful, and then the life can be what do we say, pleasure for you, you're having a pleasant life. Now let me see last stanza, stanza number 6. दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यानी कि वो हर किस्म की गुलामाना, जैसे हम किसी के बाउंड होके हम काम करते हैं, सो दैट ही वाज फ्री फ्रॉम दिस बाउंडेशन, कि उसको पता है कि ये मेरी लाइफ है, मुझे गुजारनी है, सो ही नेवर थिंक अबाउट द अदर पीपल्स, कि भाई कोई मुझे काम दे एंड देन आई विल हैव टू लिसन देम एंड अकॉर्डिंगली आई शुड हैव टू स्पेंड द लाइफ। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपने मैटर में आजाद होता है, उसको पता होता है कि मुझे कहाँ, कैसे और कब डिसीजन लेना है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद और जवाल पजीर होने का डर उसे हमेशा रहता है। उसे पता है अगर मैंने बुलंदियों पे जाना है, फेमस होना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो भी मेरे साथ क्या होगा। सो एवरीथिंग ही न्यू अबाउट इट। नाउ लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, सो अपने ख्वाहिशात का मालिक होता है, और ही नेवर थिंक अबाउट दैट आई एम हैविंग द वेल्थ, वो यहाँ पे ये नहीं सोचेगा कि मुझे यहाँ पे मनी कैसे अर्न कर दिए। अगर वो ऐसा सोचेगा देन लाइफ कैन बी डिफिकल्ट फॉर हिम। वो हमेशा ये सोचता है कि उसे अपनी ख्वाहिशात को कैसे फुलफिल करना है, और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हाउ टू अर्न द मनी। वो अपनी मतलब वेल्थ को बढ़ाने के लिए ही विल नॉट गो एंड डू द रॉन्ग थिंग्स। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको पता है कि व्हाट वुड हैपन विद हिम, वो पैसा तो कमा लेगा, वो अमीर तो हो जाएगा, लेकिन इंटरनली जो उसका सोल है, ही वुड नॉट बी हैप्पी विद दैट सोल। इंटरनली उसमें पीस खत्म हो जाएगा, ही वुड नॉट बी एबल टू स्पेंड द हैप्पी लाइफ। नाउ हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, और उसके पास कुछ ना कुछ होते हुए भी सब कुछ होता है। दोज हु आर हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, दे आर स्पेंडिंग द हैप्पी लाइफ, दैट इज अ रॉन्ग
case, that is not always correct one. There's those who are having the money, they are happy, they are not spending the happily. हमारी जो thinking है, हमारी जो mentality है, that should be the good. हम अपनी mentality और whatever we are having, we are earning, अगर उसके accordingly life गुजारना चाहें, so that we can also spend the happily life. अगर हम ये सोचेंगे कि that अगर हमें पैसा ही कमाना है और पैसा ही हमारी life है, that we should have to remove from our mind. So, in the last stanza of the character of a happy life, the speaker returns to the themes of the servitude and freedom. Because this man is free, he does not have to worry about the disappearance or reemergence of fear or hope. उसे किसी भी किस्म का डर नहीं है. These things do not bother him. उसको ये चीजें परेशान नहीं करती हैं. All he needs is God and his own life to make him happy. यानी कि सारी चीजें ज़ाहिर है अल्लाह ताला उसकी ज़रूरियत को पूरा कर रहा है, तो उसका काम है कि अब अपनी लाइफ को हैप्पी बनाए. ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपनी जिंदगी का मालिक खुद है. एंड इन कंट्रोल ऑफ ऑल दैट ही फील्स, और वो सब कुछ करना जानता है जो वो करना चाहता है. द मैन हैज नथिंग येट हैथ ऑल और एवरीथिंग. इंसान जो है, आदमी जो है, वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है वो खुद बनाता है अपने पीस ऑफ माइंड से, अपनी सोच से. अदरवाइज ही इज अनएबल टू डू एनीथिंग एल्स. यानी उसके पास कुछ ना होते हुए भी ही इज द रिचेस्ट वन इन द वर्ल्ड. अगर उसकी सोच अच्छी है, पीसफुल माइंड है, सो दैट ही कैन डू everything whatever he want, and then he would be the richest person in the world. Next, beta. Now we are going to discuss about the central idea of the poem. So central idea of the poem is uh, character of a happy life, composed by Sir Henry Wotton, is that in this poem the poet describes the qualities of a really happy man. A happy man is honest and truthful. He is the master of his patience. He is not afraid of death. This man does not care of love of the prince and criticism of the common people. अगेन सारी रिपीटिशन ही है कि एक हैप्पी मैन जो है ही शुड बी द ऑनेस्ट एज वेल एज द ट्रूथफुल, एंड ही शुड हैव द पेशेंस. इफ ही इज हैविंग द पेशेंस सो दैट he can do accordingly, he should have to spend the life according to his own wishes, and he never afraid of his death, because उसको पता है जाना ही जाना है, तो मैं मेंटली प्रिपेयर क्यों ना रहूं अपनी मौत के लिए. This man does not care for the love of the prince and the criticism of the common people. He is free from rumors. उसे किसी की परवाह नहीं होती कि कोई उसे मशहूर कर रहा है या कोई उसे बदनाम कर रहा है. He depends upon the voice of the conscience. A happy man does not care for false flattery. He is not jealous of anyone's progress. क्या दुनिया में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसको इस चीज की परवाह नहीं होती. वो कुछ करना चाहता है तो वो सिर्फ वो काम करना चाहता है जिससे अल्लाह खुश हो और किसी से उसका दिल ना दुखे. ही इज गॉड फियरिंग मैन. वो टोटली ये जानता है कि मुझे मरना है और मुझे अल्लाह ताला से डरना है, और उसके डर की वजह से मैं जो कर सकता हूँ आई विल हैव टू डू. तो वो क्या कहता है, रिमेम्बर्स गॉड डे एंड नाइट, एंड हैप्पी मैन पॉजेज his time in the company of a book or a good friend. तो वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है, या तो वो अच्छी किताबें पढ़ता है which is related with the religious point of view, या फिर वो कोई अपना अच्छा फ्रेंड बनाता है so that he can discuss all the points regarding life. He does not care for rise or fall in love. He is rich in heart and lord of himself. वो फिर खुद ब खुद अमीर हो जाता है और अपने मालिक वो खुद होता है, क्योंकि वो अपने मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता है. He was not bound for others. So this is the central of the poem. Now let me see what is the summary of the poem. How do we have write down the summary of the poem? Now next. Summary of the poem. So a person whose freedom of will and thought leads a happy life, he does not act according to other people's wishes. वो कभी भी लोगों की wishes पे नहीं जाएगा कि what they are thinking. He would be free
from any fear. He can do according to his nature, according to his mentality. His only weapon is his simplicity and truth. Such an upright man is not a slave of his desires. He is always prepared for death. This man is not concerned about being famous or in what people say about him publicly or privately. लोग उसे अकेले में क्या कहते हैं, लोग उसे पब्लिकली क्या कहते हैं, और वो फेमस होने के लिए कुछ करे. He doesn't have any this type of desire. वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचता और ना वो ऐसा कुछ करना चाहता है कि जिससे किसी और को डिस्टर्बेंस हो या प्रॉब्लम हो. अगर वो कुछ कर रहा है तो वो अपने ख्यालात का खुद मालिक है. This upright man is not jealous of chance of foul play. He knows that flattery gives the deepest wounds. He does not abide by the rules of the society, which compel a person to do unwanted deeds. He follows the rules of goodness, which will lead him to the right path. वो सिर्फ वही काम करना चाहता है जो कि उसके रिलीजन में है, या वो काम जिनसे उसको खुशी मिलती है, और या दूसरों को वो जिन कामों से खुश रख सकता है. So that can be the right path for him to do. Next. A happy man's life is freed from numerous when he is sad. He retires in his comfort of clear conscience. He has not got a high position. उसको नहीं अपनी मतलब फेमस से कोई लगाओ. He doesn't want to think about कि मैं बस रातों रात फेमस हो जाऊं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े. And then therefore people don't flatter him and nick him at his downfall. A happy man prays to God regularly. In this prayer he does not ask from rogues, but he asks God to be gracious and merciful on him. His favorite positive is good book or friend. A man who is truly happy is free from slavery of his desires. He isn't ambitious. He does not expect too much. Therefore, his hopes aren't shattered. He does not fear or downfall. This man hasn't got lands or wealth or lands and wealth, and yet he has everything. He has got the greatest wealth of contentment and happiness. So here what the writer is saying that all the time he was just praying from his God that whatever he wants, so that accordingly he should have to give just like the mercy on him, and then he should have to spend the life his positive way, and he should keep always a book with him or a good friend for him, so that everything those who are having can make him happy. वो नहीं चाहता कि whatever he was thinking or whatever the desires he was expecting, तो वो अपनी जो भी given the requirement है, given उसकी need हो, वो उसको exceed कर जाए. अगर उसे पता है कि मैं exceed कर जाऊंगा, that can be downfall for me. So that he just spending the life happily because he was having the inner soul which is very peaceful. क्योंकि वो चाहता ही नहीं अपने ख्वाहिशात को मजीद आगे बढ़ाए. वो चाहता है कि जो कुछ मेरे पास है मैं इसमें खुश रहूं. Next. Now let me see the conclusion of the poem. The poet describes the characteristic of a noble and a happy man who is honest, simple, not slave of his desire. उसने बांधा हुआ नहीं है. He was not bound enough. He follows the rules of goodness which will lead him to the right path. उसके कुछ rules हैं जिनको वो follow करता है, और यही वो रास्ता है जो उसको बिल्कुल सीधा लेकर जाता है. And then he is fearless person for anything else. उसको किसी की परवाह नहीं होती that whatever the people will think about him. वो बस according to अपने जो बनाए हुए rules हैं उनको follow करता है, and then he is happy enough. Next. There are some questions which we are going to discuss about regarding the poet as well as the poem. Next. So the question is, what according to the Sir Henry Wotton is the most essential factor in a man's life that ensures his happiness? So what it has been written according to the poet, most essential factor in man's life is
his independence और freedom, क्योंकि वो चाहता है आजादाना जिंदगी गुजारे, कोई उसे बाउंड ना करे. If a man is free, he can spend his life according to his values. अगर वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजारना चाहता है तो देयर शुड बी अ वैल्यूज इन द लाइफ, प्रिंसिपल एंड बिलीव. कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो उसने खुद बनाने हो, किन चीजों पर उसने यकीन करना है, सो दैट ही कुड स्पेंड द लाइफ. सच अ मैन may not have any riches, but he is the richest man. आइदर वो पर्सन जो है वो रिच नहीं है, बट ही इज द रिचेस्ट बिकॉज his thinking, his mentality is different from others. Thus, one's free will to lead one's life ensures one's happiness. और यही चीज उसको हैप्पीनेस की तरफ ले जाती है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ इन अ हैप्पी मैन्स लाइफ? क्या ट्रूथ है? लेट मी सी पॉइंट क्या कह रहा है. अ मैन ऑफ virtue considers truth. He always speaks the truth. This skill paves his way and enables him to overcome the difficulties of life. Since he always upholds truth, so he never fears anything. अगर वो अपनी लाइफ में ये सोच लेता है कि उसे सच ही बोलना है, चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी बोले, चाहे उसके साथ लाइफ में कुछ भी हो, वट एवर द डिफिकल्टीज ही इज फेसिंग, सो दैट ही कुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ. उसको इतना पता होना चाहिए कि उसने सच ही बोलना है विदाउट एनी फियर, तो उसको लाइफ में कभी भी किसी किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं होती. द पर्सन हु आर नॉट टेलिंग अ lie can be successful in their lives. Next. Next. Now the last question is, what does Henry Wotton's happy man feel about fame, and the needs of the society? So let's see what he is saying about it. Henry Wotton's happy man leads a simple life. He has no lust, name, or fame. He prays to God for his blessing and kindness, and not for worldly gifts such as wealth, titles, high position in society. That is why he has no fear of falling or losing his position in society. He may not have anything, but he is the richest man. बहुत अच्छी बात बोली कि सबसे पहले तो लाइफ ही उस इंसान को चाहिए कि सिंपल कर ले अपनी, और जो फेम वाली चीजें अपने दिमाग से वो निकाल दे. ही ऑलवेज प्रेज टू गॉड एंड हिज ब्लेसिंग, के जो चीजें हमें अल्लाह ताला दे रहा है हम तो उसके भी काबिल नहीं है. दीज आर द गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड्स साइड. And then he was having the high position in the society automatically. That is why he has no fear. उसको किसी भी किस्म के fear की कोई जरूरत नहीं है. He will get the position by himself. He may not have anything, but he is the richest. उसके पास कुछ नहीं है. He is not the richest person, लेकिन उसके बावजूद भी he is the richest man because of his thinking, because of his patience, because of his truthfulness. He is having a name or become fame in his life. So this is overall poem we have done. Inshallah, tomorrow we will discuss another topic, another poem, which can be the lecture of 21. So thank you so much. Allah Hafiz.